So Abhinav, finally back. Okay. Hello sir, Hanji. Yes sir. Okay. Welcome. So let me start my camera. Yes. I hope that I am visible and audible to all now. Yes. So we were about to do our map section. Probably the last. Okay, I haven't added the river cycling, Euphrates, Tigris, and okay, that we will write later. Empty slide पर आ जाते हैं. I hope you people very well know where the Euphrates, Tigris, and Ob are located. है ना? These were the rivers, na? So let's start with Euphrates first. It is located, if this is like Turkey, so from somewhere here the river originates and finally flows to the countries like Jordan, and it finally goes into Iraq and then Iran. And at Baghdad, it meets with another river called Tigris. So here we have Euphrates and Tigris. They meet at river, Baghdad, and then finally fall into Gulf of Persia. Gulf of Persia. Okay. Okay, so now do tell me, this is the longest and historically most important river of West Asia, the cradle of this Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization. Yes, go ahead. Longest, bilkul. Joins Tigris, yes, yes. Okay, Shat al-Arab. Yes, come out, like in the Gulf of Persia, yes. Cradle of Mesopotamian civilization along with the Tigris River. It originates in the Armenian highlands of eastern Turkey. तुर्की के ईस्ट में जो अर्मेनिया है, वहां से ये originate होती है, Armenian highlands से, और like after flowing through various countries, it reaches to Iraq and then Iran and then Shat al-Arab. ठीक है? They both meet at Baghdad, the capital of Iran. Baghdad, which is also, before the coming of Renaissance in Europe, the Renaissance actually came in Baghdad in the 12th century. So the Baghdad is known as the knowledge capital of world during the Middle Ages. The Middle Ages, right? Like, what is this Hoa? This one is to defining rivers of Mesopotamia, yes. Flows through Syria and Iraq, as you people know now, and joins the Tigris at Shat al-Arab. Okay, it is not like Shat al-Arab is located somewhere near Baghdad, जहाँ पर ये meet करती है, and finally falls into Gulf of Persia. Shat al-Arab is not the mouth. कौन था? जानवी. Shat al-Arab is not the mouth, but it meets Tigris at Shat al-Arab near Baghdad. Near Baghdad. It's like what I have written is it meets this Tigris. Okay, so do correct it. Okay then. So now the next river, which is very close to that Euphrates, is Tigris. It's Tigris. This is Baghdad. Okay. And here we have, okay, mouth is, yes, the mouth is in Persian Gulf country, yes, the mouth is in Persian Gulf. Here we have Persian Gulf, somewhere near Baghdad, we have that Persian Gulf. Gulf of Persia तो काफी सुना होगा, तो काफी सारे गेम्स भी हैं, मूवीज भी हैं, अलादीन एंड ऑल. So Tigris, again originating from the Armenian highland and flowing through the Arabian deserts. Sorry, this one is Tigris. Flowing through the Arabian deserts. And it also like the origin is in Taurus Mountain. यहाँ पर Taurus Mountain located है Eastern Armenia में, वहाँ से निकलती है. हाँ. And finally, it
joins the Euphrates and Ganga and falls into. तो ये जो रिवर्स हैं ये क्योंकि वेस्ट एशिया ना एक एरिड रीजन है, एरिड रीजन, और ये ये रिवर्स ऐसे हैं हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, so they provide they make the life there. In the ancient times when agriculture was the only source, so they made the life there. So they are very important for this entire region. These rivers are very important. And you know why the Baghdad became so important city? In West Asia, Baghdad is a very important city. And the reason being, yes, it is located at the Doab region. हाँ, there are many ancient sites. एक तो आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, इराक और सीरिया के पास लोकेटेड है नीम रोड, और यहाँ पर ना बहुत सारे वो आर्किटेक्चरल रिमेन्स हैं of the ancient Mesopotamian civilization, and they also are the part of UNESCO World Heritage Site, but they were recently being destroyed by the ISIS. जब ये ISIS से कब्जे में आया तो ISIS ने ये डिस्ट्रॉय कर दी, पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय कर दी. Such huge heritage which we had in that location of Neem Road, that was lost. And that was actually on the Syria-Iraq border. Okay. Mosul Dam. Okay, Mosul Dam, largest dam. So, and this river, you know, both these rivers, they are navigable up to Baghdad. Like यहाँ से boat के through आप Baghdad आ जा सकते हैं. These rivers are navigable up to Baghdad from the mouth. That's what makes the Baghdad an important city. So earlier, the Arabian traders, they used to come through via water to India, take the important, I would say, take the knowledge and information from here and go back. So when India was under darkness, when Europe was under darkness, in the Middle Ages, Baghdad was flourishing. Baghdad was flourishing. But it was after the rise of Ottoman Empire that Baghdad bhi khatam ho gaya, and the power shifted further westward. Okay. Okay then next one is Ob. You know Ob, where the Ob is located? Russia. In which part of Russia? I will be having some map. Western Siberia. This is Siadria. I'll be covering them tomorrow. So go on. Western Siberia, 7th longest river in the world. Okay, origins in Altai Mountain. Okay. Then with the Irish form, the world. Okay, Irtish. Gulf of Ob is world's longest estuary. Okay. This is not important. Forms at confluence of Bia and Patna. मतलब बहुत सारे नाम याद नहीं रहते ना. ठीक है. So that river Ob is a major river in Russia, located in the Western Siberia region. It's world's 7th longest river, and almost 3,700 kilometers. Not important. Forms at the confluence, जैसा कि जानवी ने बताया, but again नाम याद नहीं रहेंगे, तो ओब कहाँ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. One of the 3 great Siberian rivers, कौन सी? लीना, येनसी और ओब. तो यहाँ पर ये तीनों लोकेटेड हैं इन द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, और ये तीनों मेजर रिवर्स हैं ऑफ साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. Gulf of Ob is world's longest estuary, crosses several climatic zones, of course. Yenisei, Lena और Ob. ठीक है. The largest city of Siberia is Novosibirsk. Novosibirsk important नहीं है, but it is located at the bank of Ob. ठीक है.
और बाकी आप लोग कर ही चुके हैं, तो दैट्स इट फॉर द मैप टुडे. Tomorrow we'll be moving towards the leftover rivers of Asia, which include Irtish. कल मैं मैप पे वो भी कवर कर लूँगा जो आज नहीं हो पाया. Irtish, Mekong, एंड अमूर. एक अमूर सियार दोनों ही कर लेना. अमूर दरिया एंड सियार दरिया, मेकॉन्ग और इर्तिश. ये मेजर रिवर्स हैं, लाइक 6 मेजर रिवर्स जो मैंने आपको करा दी. जो पहले लाइक है ना, ये ओब हो गई हमारी, यूफ्रेटस, टिग्रिस, जेनेसी हम पहले शायद कर चुके हैं, और इर्तिश, मेकॉन्ग, अमूर दरिया, सियार दरिया हो गया. गंगा वगैरह हम पढ़ चुके हैं, वांगवो पढ़ चुके हैं, हम यांगजे पढ़ चुके हैं, है ना. तो लाइक मेजर रिवर्स वी हैव डन मोर और लेस. अब बस ये और 3 कर लो तो एशिया का ऑलमोस्ट डन. ठीक है, तो आई बिलीव कि इससे आगे वो जाने की कोशिश नहीं करें. प्लीज राइट ऑन द होमवर्क फॉर टुमारो. ब्रिटिश, मेकॉन्ग एंड अमूर और सियाल, एंड रेस्ट यू हैव टू कवर योरसेल्फ. अगर कुछ बचता भी है तो दैट्स योर लाइक रिस्पांसिबिलिटी टू कवर. ऐसे अभी कुछ बचा नहीं. only major things we have to do and that we have done. More or less वर्ल्ड मैप मेरी तरफ से बस खत्म ही है, लेकिन उसके जैसे इसका तुम लोग ऐसा भी सोचते हो कि सब कब से खत्म हो रही है और खत्म नहीं हो पा रहे. यस, हाँ. तो इफ देयर इज एनी डाउट or any query like whatever we have done in the last class, अगर किसी को कुछ पूछना है तो please do come ahead. Otherwise we are moving towards, I think we have done the land breeze and sea breeze. Now we'll be writing about anabatic and catabatic winds. ठीक है, तो है किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बी क्विक. यस, let's move towards anabatic and catabatic winds. What the anabatic and catabatic winds are, or the upslope mountain winds or downslope winds are. ठीक है, तो during the day when we have sun there, समझने की कोशिश करना. Okay, समृद्धि I'll do at the end. ठीक है, I'll do at the end. ठीक है, तो during the day when we have sun ahead, so heat comes, huh? And you know which part would get heated first, the slope or the valley? What do you expect, the slope or valley? Obviously slope, क्योंकि slope ऊपर है और insolation भी यहाँ पर clear आता है ना. तो this part of slope which will get heated fast, what will happen there? यहाँ से हीट बहुत जल्दी राइज करेगी. यहाँ से हीट जो है अपस्लोप की तरफ, क्योंकि एयर हीट हो रही है तो कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ. तो द एयर विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, कॉजिंग एन अपस्लोप विंड ड्यूरिंग द डे, which seems to be coming from valley and going towards the mountain. Yes, which seems to be coming from the valley and going towards the mountain. जैसे वैली ब्रीज ही बोलते हैं. ठीक है, जैसे वैली ब्रीज ही बोलते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर केस द विंड राइजेस, एंड बट ऑब्वियस है कि राइजिंग विंड विल कूल डाउन एंड कॉज द रेनफॉल, while it will go ahead to form that circular cell, that loop. So this particular wind, which is often seen during the day where the wind rises upslope, is called as anabatic wind, upslope wind, or the valley breeze, Clear? Is this clear to all? Huh? I don't worry. During the day, हाँ, just like sea breeze now, but obvious है.
कि देखो होता क्या है कि जब दिन का टाइम होता है तो जो सरफेस ऊपर है वहां पर सनलाइट पहले आएगी, है ना। अगर कोई सरफेस ऊपर है तो यहाँ सनलाइट पहले पहुंचेगी, और वैली में क्या होता है, इसकी वजह से सनलाइट नहीं आ पाती, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कूलनेस क्रिएट हो जाती है, एक कूलनेस क्रिएट। तो वैली से तो ज्यादा मतलब होता नहीं, मतलब होता है यहाँ से जहां तक सनलाइट आ रही है। तो यहाँ से विंड क्या करती है, गर्म, लाइक विंड गेट्स हीटेड फास्टर, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है ना। विंड विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड और अप स्लोप, and this rise of wind is because of heat, the insolation received by the mountain slope, and since it seems to be coming from the valley, नीचे से आ रही है ना, it seems to be coming from the valley, we name it valley breeze, है ना। and these are anabatic winds, right? So they rise up, after rising they cool, cause rainfall, then they settle down at some other place and completes the cycle, and this is all about the valley breeze or anabatic winds or upslope wind. Cold wind just coming down. No, this one is not the katabatic, this one is katabatic wind. And if you are talking about this Supriya, you are correct. Sir, हाँ. so this whole process as such is called the anabatic winds. Anabatic winds. Like I am here to explain कि periodic winds कैसे चलती हैं. तो अगर आप माउंटेन्स पे हैं तो दिन के समय आप क्या विटनेस करेंगे, that there are winds which are moving from the valley up to the slope, while if you are in night there, you will witness that there are winds which are blowing from the slope towards the valley during the night. So like we can see here that the direction of wind changes in a periodical sense, and thus katabatic and anabatic winds are a type of periodical winds. ये periodical winds के एक प्रकार हैं. Is that clear? I haven't dictated anything, Ritika. I'll be dictating. Don't worry. सर हाँ बोलो. सर मतलब जो स्लोप है सर, पहाड़ का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हीट हो जाएगा इंसुलेशन की वजह से, और नीचे वाला जो पार्ट है वो जाहिर सी बात है हीट नहीं गया तो वो ठंड कूल रहेगा. दैट मींस स्लोप हाई प्रेशर नीचे वाला पार्ट का, तो हाई से नीचे से ऊपर की ओर एयर बट जाएगा. ऑब्वियस है ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये बट ऑब्वियस है, यही कंडीशन चल रही है हमेशा. मतलब मैंने क्या बताया, वार्मिंग हो रही है मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब इसका इनवर्स ही लो प्रेशर. कूलिंग हो रही है मतलब लो टेम्परेचर, मतलब इसका इनवर्स हाई प्रेशर, है ना. लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी. ये तो बट ऑब्वियस है, ठीक है. अब आ जाते हैं कैटाबैटिक विंड्स पर. मैं दोनों समझा देता हूँ, फिर दोनों एक साथ ही लिखवाता हूँ. तो ड्यूरिंग द नाइट, सोचो एक ये सरफेस है जो थोड़ा सा हाइट पे है, और एक ये सरफेस है जो वैली में है. यस. तो जो सरफेस हाइट पर है, ओपनली एक्सपोज्ड है, वहां से आउट रेडिएशन ज्यादा आसानी से निकल पाएंगे. यस. द हीट इन द फॉर्म ऑफ आउट रेडिएशन वुड बी मोर इजीली escape from this upper slope surface, and since the heat is being lost in the form of out radiation by the slope से बहुत सारी हीट लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द नाइट. इस आउट रेडिएशन की वजह से स्लोप जो है वो कंपैरेटिवली हो जाएगा ठंडा, हाँ, यानी कि लो टेम्परेचर मींस हाई प्रेशर, and the valley is still comparatively hotter. तो कंपैरेटिवली हॉटर मतलब लो प्रेशर, तो विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ जो लो प्रेशर विंड है वो ऐसे राइज, और यहाँ ऊपर से ठंडी हवाएं माउंटेन से और वैली फ्लोर पर आती हैं. एंड दैट्स व्हाई इन द विंटर्स, स्पेशली इन द विंटर्स, जब ये वाली जो विंड्स हैं ये बहुत ठंडी हो जाती हैं, दे आर कोल्ड इनफ to bring the freezing conditions. तो विंटर्स में हमेशा वैली में सेटलमेंट या किसी भी तरह का वेजिटेशन अवॉइड किया जाता है. Why? Because these chilling winds, क्या कड़कड़ाती हुई ठंड में आपकी हड्डियां कपा सकती हैं, लाइक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स. So these chilling winds can actually
be very dangerous for human habitation and for the agriculture purposes, leading to like losses, both life and property losses. They can be very dangerous. That's why in hills often the valley side is being avoided for habitation and vegetation. अगर खुद से कोई वेजिटेशन वहां पर ग्रो हो जाए तो यू नो दैट विल बी सिक्योर इनफ, क्योंकि वो नेचुरल है, तो वो वो अपने आप को बैलेंस कर लेगी. बट अगर हम किसी तरह के फल सब्जी उगाने पहुंच जाए, नीचे खेती करने, तो दैट विल गो इन वेन, वो बर्बाद हो जाएगी वेजिटेशन. एंड इज ऑल बिकॉज कि यहाँ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं और हम चले आलू उगाने, तो यू नो पोटैटो ठंड में बेकार हो जाते हैं. क्या बोलते हैं उसे, पाला मार जाना उसमें किसी ने. There was one colleague of mine, उसके आलू के खेत थे, and he used to tell me कि अच्छा पाला मार जाता है. तो I was, उसके पाला क्या होता है? When I came to know, अच्छा, that's the whole process. And then as our project during the engineering, we designed like a system that can prevent the potatoes from getting damaged because of that pala. But हाँ, like आप जानते हो कि वो implement नहीं होते. How valley can be comparatively warmer? The warm air has risen up, na? The warm air has risen up. अच्छा, I'm not aware कि पाला भोजपुरी वर्ड है, कैसा वर्ड है, लेकिन पाला शायद मेरे ख्याल से उसी को बोलते हैं ना, क्या that ओस फॉग है ना, फॉग को बोलते हैं. आई एम करेक्ट. ठीक है, तो आई होप कि टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर. नाउ वी कैन राइट ऑन इट इफ देयर इज एनीथिंग. हाँ, कर. Also, anabatic winds are the moist winds. That's why they have rainfall. No, like both winds can be moist wind. Like anabatic wind would be, since they are coming because of the heat here, na? So they are warm winds. Warm winds. When they will rise, then they will have that moisture, like cooling of that vapor. Cooling of that vapor. So since they are cooling, then they will lead to precipitation. But in this case, if the wind is coming down, so don't you think it will get heated by the reverse of environmental lapse rate? और heating हो जाएगी तो बारिश का सवाल ही नहीं उठता, है ना? So they are not moist. Like the moisture does not depend on this heating. Rather the relative humidity depends. अब पूछोगे ये क्या है, तो रुक जाओ, आने दो, जब हम ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे तो समझा. बाकी मैं आपको इतना बता चुका हूं कि द विंड इज राइजिंग, देयर वुड बी दिस क्लाउड फॉर्मेशन एंड इट विल गेट कूल्ड बाय दैट एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एंड देयर कैन बी precipitation. And if the wind is coming down, then aridity increases. Okay then. So I would like you to write down few points in this catabatic and anabatic winds, and let's first start with the catabatic wind. Sorry, anabatic wind. Sorry. So they are like पहले दोनों के लिख सकते हो. They are the diurnal winds. They are diurnal winds seen in mountains, observed in mountains. They are diurnal winds seen in mountains. First, anabatic or upslope, winds which occur during the day. Anabatic or upslope winds which occur during the day. Likho, they occur due to the more heating of slopes. They occur due to the more heating of slopes during the day. They occur due to the more heating of slopes during the day compared to valley. They occur due to more heating of slopes during the day compared to valley. Full stop. This generates a low pressure condition. They occur due to the heating of slopes. They occur due to the heating of slopes during the day. They occur due to the more heating of slopes during the day
during the day compared to when, compared to when, तो लिखवाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे नहीं लिखना पड़ेगा. Compared to valley, full stop. This occurs because this creates a low pressure. This creates a low pressure in the upslope area. This creates a low pressure zone in the upslope area, giving rise to an up valley wind. Up like upslope wind. Huh? This creates a low pressure zone. This creates a low pressure zone in upslope area. Giving rise to an up valley wind. Giving rise to an up valley wind. Giving rise to an up valley wind. तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एक अप वैली विंड क्रिएट हो जाती है कमिंग टू द वैली, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वैली ब्रीज और अपस्लोप विंड. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वैली ब्रीज और अपस्लोप विंड. इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना. और जो भी विंड ऊपर जाती है वो क्यूमुलस क्लाउड बना लेती है, लाइक क्यूमुलोनिम्बस से क्यूमुलस क्लाउड, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है. दैट्स इट. क्यूमुलस क्लाउड क्या है? ठहरो, हैव पेशेंस. ठीक है. फिर डाउन वेलिंग और डाउन स्लोप विंड और कैटाबैटिक विंड. डाउन वैली और डाउन स्लोप और कैटाबैटिक विंड. डाउन वैली और डाउन स्लोप और कैटाबैटिक विंड. इसमें लिखो आफ्टर, इसे हम माउंटेन ब्रीज भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन ब्रीज. लाइक बिकॉज इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन. इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन टू द वैली. तो देखो इसमें आफ्टर द सनसेट, the rapid radiation loss occurs on the slope. After the sunset, the rapid radiation loss occurs on the slope. After the sunset, the rapid radiation loss occurs on the slope, developing comparatively high pressure region. Developing comparatively high pressure region there. Developing comparatively high pressure region there. There मतलब यहाँ पर अपस्लोप है, ये वाला region. Full stop. This cold heavy wind moves downward. This cold heavy wind जो यहाँ पर जनरेट हुई है, this cold heavy wind moves downward. Dictating too fast. सर थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा. मैं होऊंगा ही. सॉरी. मैं सुनना चाहता था ऐसा कि हाँ मतलब, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. आज अगर नहीं पेन नहीं चल रहा है ना, तो कल भी नहीं चलेगा पेपर. यू आर नॉट एबल टू राइट हेयर, यू वोंट बी एबल टू राइट इन 7 मिनट्स. ये नसें है ना, यहाँ से दर्द करने लगती है. तब जो मीठा मीठा दर्द होता है ना, तब एहसास होता है कि हाँ अच्छा लगता है. So this downslope movement, this cold heavy air mass, this cold heavy air moves downslope towards the valley floor during the night. This cold heavy wind moves downward towards the valley floor, during the night, called as mountain winds. That's it. If you want, you definitely can draw 2 diagrams, one for anabatic wind and other for catabatic. Anabatic में ऐसे बनाना, सूरज बनाना और wind rise करते हुए दिखाना, है ना. और यहाँ पर ये, और catabatic में this night, हाँ, और downward movement. That's it. So I hope that these things are clear to you people. And now we can do the monsoon. थोड़ा बहुत monsoon के बारे में जान सकते हैं. But this would be a very brief introduction to the concept of monsoon, because it demands at least 1 lecture. और वो मैं आपको कराऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट डिटेल में. So till now things are clear. Okay.
तो अब let us move towards the third concept called monsoon. देखो अभी तक पीरियोडिक विंड्स में हमने क्या देखा, that they were changing their direction usually on the daily basis, है ना, डेली बेसिस पर उनकी डायरेक्शन बदल. Now in the extended version of these periodical winds, we'll be witnessing the monsoon winds which are changing their direction on seasonal basis. On seasonal basis, as the season changes, the direction of wind changes. As the season changes, the direction of wind changes. ठीक है. अच्छा, तो मैं पहले यहाँ पर कुछ चीजें समझाऊंगा, then I will make you write few things, है ना, then we'll move on. तो पहला कंसेप्ट, जैसा कि मैंने बताया था, during the summers, the ITCZ actually takes this position over the Indian subcontinent. उम्मीद है आप ITCZ जानते होंगे, मुझे आपको नहीं बताना पड़ेगा क्या है. हाँ, ITCZ takes this position during the summer. During the summer. देखो ऐसा कोई है जो नहीं जानता है तो I can actually like I will actually tell. हाँ, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, यहाँ शर्माने का काम नहीं है. This intertropical convergence zone during the summer, which is at the equator in normal condition. Yes, at the equinox, ये कहाँ मिलेगी? इक्वेटर पर मिलेगी. Now this has shifted to here. इसका मतलब है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कहीं यहाँ पर होगी, और ये जो नीचे वाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन थी वो कहीं यहाँ पर होगी, इक्वेटर के आसपास. Yes or no? एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो यहाँ पर कहीं होगी, और दूसरी वाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन भी सूरज की तरफ खिसक करके कुछ नॉर्थ में आ जाती है. Tropical high pressure. So what will happen now? The concept is very clear. You know, trade easterlies would be like this. Trade easterlies would be like this. Yes? Yes or no? So what do you feel that India would be witnessing? What kind of wind? Would they be like this? Would they be like this? From the south, the southern hemisphere subtropical zone to ITCZ? Haven't you heard about the southwest concept of monsoon? There are southwest monsoon. So like, but we have eastward wind. We have eastward wind. So how to solve this problem? Why we have that southwest monsoon? Rather, we should have this southeast monsoon winds. ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तक. ये तो गलत है, मतलब साइंटिस्ट को पता नहीं है. हाँ, तो लाइक जानवी दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ईस्ट ओनली ना. हाँ, तो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गई नॉर्थवर्ड, तो क्या अभी नहीं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी ऑफन हर्ड के इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, समृद्धि ऐसा सुनते हैं हम. बट अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से जाएं तो जो सदर्न सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट, वो यहाँ आ गई है. ITCZ यहाँ है, तो यहाँ पर तो ट्रेड ईस्टर्लीज का राज होना चाहिए ना, और मॉनसून हमारे यहाँ आना चाहिए बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट विंड्स, क्योंकि ये ईस्ट से आ रही है. व्हाई वी हैव साउथ वेस्ट मॉनसून है? पता नहीं था इन्हें, तो पढ़े नहीं है. ओके, मुझे लगता है किसी को नहीं पता. Sir, maybe because of Coriolis force. Yes, it's all because of Coriolis force. क्योंकि आपने कहा था अगर साउथ से नॉर्थ में जाएगी तो ऑब्वियसली वो विंड डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हो जाएगी. तो अगर ये ITCZ है और यहाँ पर आ चुकी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और सपोज करो यहाँ पर है इक्वेटर, यहाँ पर है इक्वेटर 0 डिग्री, और वो तो हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, वो तो शिफ्ट नहीं होगा, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इक्वेटर के बहुत पास आ गई, और ये है हमारी ITCZ. तो नाउ व्हाट विल हैपन as these easterlies come after entering the northern hemisphere, they turn eastward as they are coming from west.
because due to Coriolis force they will try to shift towards their right. वो अपने right में shift हो जाएंगे because of the Coriolis force. Yes, isn't it? And then the winds we have are southwest winds rather than southeast winds. Yes, is this clear to all? Why we have southwest winds and not southeast winds, despite we are under the influence of trade easterlies? Yes, yes. और ये हर उस जगह पे होगा, like not for India only सुप्रिया, but जो भी जहां भी IT सीजेट इतना नॉर्थ में चली जाएगी तो वो सभी कंट्रीज सब विटनेस करेंगे. भाई ऐसा थोड़ी म्यांमार में साउथ ईस्ट मानसून आएगा, वहां पर भी साउथ वेस्ट मानसून आएगा. हाँ, अफ्रीका में भी लगभग कंडीशन वैसी ही होगी, बट थोड़ा डिफरेंट कि वहाँ का ईस्ट कोस्ट है ना, तो वहां पर विंड्स ऐसे नहीं जा सकते. बट वेरेवर दिस IT सीजेट गोज टू दिस नॉर्थ, so we will have winds coming from west. ये concept बिल्कुल clear. Why? Because after crossing the equator, the winds will take right turn under the influence of the Coriolis force. Coriolis force. Yes. कि हमारा बच्चा तो सीधा था पर कोरियोलिस फोर्स ने उसे बिगाड़ दिया. तो उसके इन्फ्लुएंस में जाना ही क्यों है? साउथ में रहो, साउथ में रह सकते हो. यस, ओनली फैक्टर इज कोरियोलिस फोर्स. हाँ, यहाँ पर ओनली फैक्टर कोरियोलिस फोर्स है. हाँ, दिस इज द ओनली रीजन. नो लैंड वाटर रीजन यहाँ पर नहीं है, उसके अलग अलग कंसेप्ट है और वो बाद में आएंगे. डोंट वरी, अभी सिंपल समझो, थोड़ा समझो, है ना. बहुत सही कंसेप्ट है. अभिनय वाशवा एक कहाँ गायब हो गए? कुछ और इम्पोर्टेंट चल रहा है क्या आजकल? ओलंपिक भी तो खत्म हो गए. ओके, मे बी उन्होंने ओके वाशवा से कुछ याद आ गया उन्हें. चलो ठीक है, हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं. प्लेसमेंट क्या है? इट्स ओके, आई गॉट फिनिश्ड. अरे हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए जॉब करने के लिए. निष्ठा वो भी नहीं, वो भी छीन लोगे तुम हमसे. राउत किसकी जॉब लग रही, किसका प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे? क्लियरली बोलो. ओके, तो आर दीज पॉइंट्स क्लियर टिल नाउ जो मैंने अभी तक समझाया? ठीक है, रहने दे. ओके, तो अब पॉइंट पर आते हैं ना. अब पॉइंट पर आते हैं. मुझे लगा अभिनय की बात हुई. अभिनय तो आ गया वापस. व्हाट वी वर डूइंग, मॉनसून, है ना. तो मॉनसून का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको समझा दिया. तो देखो, ये हम कब देखते हैं? ड्यूरिंग द समर्स. ड्यूरिंग द समर्स. अब ड्यूरिंग द विंटर्स क्या होता है? IT सीजेट वापस आ जाती है यहाँ पर, लेकिन इक्वेटर से थोड़ा नीचे, है ना. अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से थोड़ा नीचे. और जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी लाइक 30 डिग्री से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी. समवेयर हियर, मान समवेयर हियर, लाइक थोड़ा सा यहीं पर है. तो अब जो विंड चलेंगी ड्यूरिंग द विंटर्स, व्हाट काइंड ऑफ विंड्स दे वुड बी? दे वुड बी मूविंग इन दिस मैनर, बिकॉज दिस इज IT सीजेट and this is northern hemisphere subtropical high pressure belt. So now India will be under the influence of winds which are northeasterly in nature. Northeasterly in nature, yes or no? Yes. So this is what I was telling. The word monsoon is basically taking from the Arabian word mausim.
तो अभी मैंने बताया था अरब ट्रैवलर्स केम टू इंडिया। तो जब वो इंडिया आते थे तो उन्होंने एक पैटर्न देखा कि गर्मियों में तो ऐसी हवाएं चलती हैं जो हमें इंडिया की तरफ ले जाती हैं, और सर्दियों में ऐसी हवाएं चलती हैं जो हमें इंडिया से दूर ले जाती हैं। अरब तो वेस्टर्न कोस्ट पर ही आएंगे। तो दे गेव इट अ नेम मौसम, और सिंपली मौसम का बदलना, मौसम की तरह बदल जाती है विंड्स, यानी मौसम के साथ बदल जाती है। So the idea is very simple, that the wind which completely change their direction with season or in a periodical manner, they are called as monsoon winds. They are called as monsoon winds. In case of India, you can definitely notice that pattern, that during the summers we have southwest monsoon winds, southwest monsoon winds, while during the winters we have northeast monsoon winds. Although they are not usually monsoon winds, they are northeastern winds, northeast winds. And this change of direction in periodical or seasonal manner gives them the name like periodical wind, or like makes them a category of periodical wind. Yes, so it's but obvious that during the summers the high pressure is located somewhere here, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन यहाँ पर लोकेटेड है, और लो प्रेशर इज लोकेटेड एट द आईटीसीजे। हाँ, आईटीसीजे। तो विंड्स कैसे मूव करेंगी? फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। Since they are covering the entire Arabian Sea or even to some extent Bay of Bengal, so they will definitely be bringing water with them. हाँ, आएंगे तो अपने साथ कुछ लेकर ही आएंगे, तो ये अपने साथ मॉइस्चर, एंड दे विल बी कॉजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो हम आजकल देख रहे हैं, Like right now we are in the monsoon period, which is almost for the 4 months from starting from June to September, and India receives 80% of its total rainfall in these 4 months only. ठीक है। परफेक्ट मॉनसून के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हाँ, पैटर्न होता है, ब्रेक्स होते हैं, ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट होता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब नाउ ड्यूरिंग द विंटर्स द कंडीशन इज जस्ट रिवर्स्ड। विंटर, सर्दियों में आके कंडीशन जस्ट पलट गई। पलट कैसे गई? कि यहाँ पर अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लोकेटेड है, यानी कि यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन है, और यहाँ पर आईटीसीजेड है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो अब विंड्स कैसे चल रही हैं? लाइक दिस। यस, so in that case, when the winds are blowing in a northeasterly manner, the winds are coming from land to sea. Land to sea. And since they cannot take any moisture from land, जमीन से कोई पानी तो खा नहीं सकते बेचारे, so these winds are usually the dry winds, generally the dry winds for most of the region. हाँ, तो इसकी वजह से भी इंडिया में ड्राइनेस होती है। विंटर ड्राई का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वी आर अंडर द ड्राई विंड्स। ठीक है, वी आर अंडर द ड्राई विंड्स ड्यूरिंग द विंटर। बट यहाँ पर एक छोटा सा कैच क्या है? कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सर्दी में भी मजे लेते हैं और गर्मी में। हाँ? कौन है वो एरियाज? दिस पार्ट ऑफ इंडिया, this part, which includes, I would say, क्या बोलूं उसे, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट का ओरिजिनल नेम क्या है? हाँ, तमिलनाडु, चोलामंडलम कोस्ट, and the Bay of Bengal was known as चोलामंडलम लेक। चोलामंडलम लेक। तो होता क्या है कि here we have पाल घाट in the western घाट्स। यहाँ पर एक पाल घाट पास है, इसका नाम है शेनकोट्टा पास या पाल घाट पास, आसपास ही, मतलब पाल घाट पास है, शेनकोट्टा पास है, यहीं पर है।
So the monsoon winds from these passes enter and pass on to reach this region of Tamil Nadu, causing rainfall in the Coimbatore, जिसे आप ऊटी कहते हैं, आसपास का region. They get good amount of rainfall there. Good amount of rainfall from the southwest moon. From the southwest. और ये हाँ बिल्कुल. Sir, you just now gave some name. Coromandel Coast. Cholamandalam Lake. Cholamandalam. Thanks. कोई नहीं, अशोका का दूसरा एडिट पढ़ ले, मिल जाए. हाँ, तो वहां पर तीनों के नाम मिलेंगे, छोला, चेरा, पंड्या और केरला पुत्रास सब मिलेंगे. हाँ, चेरास. then in winters from हाँ वही जानते हैं ना. तो like so they got the rainfall from southwest monsoon during the summers. Now this region again receives the rainfall during the winters. Because here the northeast winds are to flow, they have to flow over the Bay of Bengal, और वो यहाँ से मॉइस्चर पिक कर लेते हैं और अंडमान पर और तमिलनाडु के इस रीजन में रेनफॉल करते हैं, लीडिंग टू ऑल ईयर रेनफॉल. बट हाँ, एक बड़ा पार्ट है तमिलनाडु का जिसे सिर्फ विंटर रेनफॉल मिलती है, समर रेनफॉल इस वेस्टर्न घाट्स की वजह से नहीं मिल पाता. हाँ, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं तमिलनाडु में विच रिसीव्स बोथ द समर मॉनसून एंड द विंटर रेनफॉल और ये लाइक इंडिया में विंटर रेनफॉल दो तरह से होती है, एक तो यहाँ से मैं बाद में बताऊंगा, और एक ये वाला. और यही रीजन है. नाउ दिस अगेन इज द रीजन फॉर रिवर कावेरी being a peninsular perennial river. दोस्तों पेनिनसुला में कोई perennial river नहीं है, but Kaveri is a peninsular perennial river. And how it can be? Like it is from here we have Kaveri here, तो साउथ वेस्ट मॉनसून से गर्मी में पानी मिल जाता है, तो वो फ्लो होती रहती है. और सर्दियों में it gets the water from northeast monsoon, so thus it gets the rainfall for the entire year. और फिर भी पानी के लिए लड़ाई कहाँ हो रही है? वहीं पर हो रही है. Yes. हाँ, कुछ कहना है लोग? हाँ, दक्षिण गंगा. बट दक्षिण गंगा ना एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म है, वो दोनों रिवर्स के लिए यूज होता है, गोदावरी के लिए भी और कावेरी के लिए. वर्ड कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो दोनों के लिए यूज होता है. ठीक है, क्लियर टू ऑल? यस जानवी. Apart from Ganga and Brahmaputra, Kaveri is the only perennial river we have, right? Okay. All the Himalayan rivers are the perennial rivers because during the summers they get water from southwest monsoon, but during the winters by melting of glaciers. Yes. While all the peninsular rivers are non-perennial, except Kaveri. Okay then. I feel till now things are very clear to you people. मुझे नहीं लगता कि कुछ भी और ऐसे समझाने की जरूरत पड़ेगी इसमें. Yes. And like I was trying to tell you something now. पर ठीक है, लिख लो, बाकी तो हम करते रहेंगे. मानसून होगा, अभी काफी डिटेल में होगा. मानसून में बहुत कुछ है बताने के लिए. तो ये तो एक सिंपल रीजन है कि मानसून क्यों आता है ना. बट यू नो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. आज तक समझ में नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव अराउंड 150 ईयर्स ऑफ डेटा. हर साल कितनी बारिश हुई, हमारा IMD के पास डेटा है 100 साल का, और इसके बाद भी हमें समझ में नहीं आया कि मानसून इस साल कैसा होगा. हम मतलब आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई लाइक दिस इज व्हाट नेचर इज. और यही जानने में मजा भी है. ओके, तो अब मानसून की हेडिंग डाल लो और स्टार्ट राइटिंग फ्यू डेफिनेशन. वेरी फर्स्ट is the definition, not point, the definition. That winds which change their direction seasonally or periodically
winds will change their direction seasonally or periodically are called as monsoon winds. Are called as monsoon winds. Clear? साफ साफ दिखाई दे रहा है? Are called as monsoon winds. Next point. तो अब यहाँ पर आती है एक थ्योरी, और वो सिंपल थ्योरी. थ्योरी क्या है कि ये लैंड है और ये वाटर. यस, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी. ड्यूरिंग द समर लैंड कैसी होगी? हीटेड. हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर कंडीशन. क्लियर? भाई समर्स में लैंड जल्दी गर्म होगी मतलब हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर. On the other hand, water that gets heated slowly would have low temperature compared to land. That simply means high pressure. ये जो हम बेल्ट की बात कर रहे हैं वो जनरेट भी तो कहीं से हो रही होगी. उस बेल्ट के आने का रीजन क्या है? हमने बात तो कर ली कि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर आईटीसीएड लो प्रेशर बेल्ट आ गई. बट ये कहाँ से आ रही है? देयर वुड बी सम रीजन बिहाइंड देम. द रीजन इज दिस. The land gets heated, generates a low pressure condition, while the water is being a bit cooler, generates high pressure condition, and this temperature difference leads to pressure difference, leads to blowing of wind from water to land during the summers. But ये इतना आसान नहीं like monsoon. क्यों? अगर ऐसा है तो monsoon हर वक्त आना चाहिए, like for the larger summers. बट अप्रैल और मई में बहुत गर्मी पड़ जाए पर मानसून नहीं आएगा. कितनी भी गर्मी हो जाए, 48 छोड़ो 50 क्रॉस हो जाए, मानसून नहीं आएगा. तो उसके अलग अलग थ्योरीज है, हम उन पर बाद में आएंगे. दैट इज कॉल्ड बस्ट ऑफ मानसून. उसके बारे में हम बाद में. तो अभी लिखो अगला पॉइंट. द रैपिड हीटिंग ऑफ लैंड इन समर. रैपिड हीटिंग ऑफ लैंड इन समर rapid heating of land in summer creates a low pressure zone on land, which leads to attracting of southwest monsoon winds from surrounding ocean. ओशन के बाद ब्रैकेट में लिख लेना हैविंग हाई प्रेशर जोन. अट्रैक्टिंग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम द ओशन हैविंग हाई प्रेशर जोन. यहाँ के हाई प्रेशर से लैंड के लो प्रेशर पर जो विंड का मूवमेंट है, बस यही मॉनसून. ठीक है, तो ये होता है समर में. देखो हमने लिख लिया रैपिड हीटिंग ऑफ लैंड इन समर. ठीक है, डन. The next line, while during the winter, land cools faster compared to sea. The land cools faster compared to sea. And develops a high pressure zone. Land cools faster than the sea and develops a high pressure zone. Full stop. This leads to blowing of winds. This leads to blowing of wind from land to sea. This leads to blowing of winds from land to sea. This leads to blowing of winds from land to sea. In the form of northwest monsoon winds. ऐसे डैश लगा के, in the form of northwest monsoon winds. Full stop.
they are usually dry. They are usually dry. यानी इनकी वजह से लगभग बारिश नहीं हुई. They are usually dry. Next point. Now I'll be telling you about certain other winds which are kind of pre-monsoon winds. ये बस आपकी जानकारी ऐड करने के लिए और कुछ भी नहीं. Monsoon clear है सबको? Like till now we have done the monsoon. Basic idea about monsoon सबको clear होना चाहिए. इसमें मैंने दो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए, विंड मूवमेंट और डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. प्रेशर बेल्ट मूवमेंट पहला और दूसरा डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. अगर कोई डाउट है तो फटाफट. हाँ कंटिन्यू. Also, during the winter, these are the northwest monsoon winds or northeast monsoon? नॉर्थ ईस्ट. अरे यहाँ से तो ईस्टर्ली विंडी चलेंगी. You said northwest. Why? Okay, fine, said. लेकिन मैंने लिखा नॉर्थ ईस्ट ही है. मैंने लिखा नॉर्थ ईस्ट ही है. गलती से. Okay, okay, ओके, तो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई. ओके, राइट. तो अब थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो नोट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी आप लिखते हो और उसमें पॉइंट लिख लो. इन द मॉनसून that before the coming of monsoon there are certain local winds. Before the coming of monsoon there are certain local winds. ऐसे कॉलर लगा के और नीचे आ जाना फर्स्ट. यहाँ पर फर्स्ट लिखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस ऐसे पॉइंट लगा के मैंगो शावर एंड चेरी ब्लॉसम. मैंगो शावर एंड चेरी ब्लॉसम. मैंगो शावर एंड चेरी ब्लॉसम. तो मैंगो शावर जनरली जो नेम है वो यूज होता है कहाँ पर? केरला में. और चेरी ब्लॉसम यूज होता है कर्नाटका में. चेरी ब्लॉसम इतना साफ साफ तो लिखा है CHERRY ब्लॉसम. हाँ, these are local winds. मैंगो शावर एंड चेरी ब्लॉसम. तो समृद्धि भी मुझे सपोर्ट कर रही है. आप लिखा ना. अच्छा, पार्टी बदली. कोई बात नहीं. सर मैंगो के साथ क्या है? मैंगो शावर. मैंगो शावर. शावर. Mango shower and cherry blossom. So these are basically the names in Kerala and Karnataka respectively. Yes. और केरला में क्यों मैंगो शावर बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मैंगो की फसल होती है ना, उस पे बिकॉज ऑफ दिस, आपको पता होगा कि अगर बारिश आती है तो आम पकने लगते हैं, या वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी आ जाते हैं आम से पहले जो भी आते हैं. मुझे हिंदी वर्ड ही पता है, इंग्लिश में मुझे भी नहीं पता. तो that flower of mango begins to start. मजा जो भी बोलते हैं वो. तो that begins to come, है ना. तो इसलिए इनके आने से मैंगो का आना शुरू हो जाता है केरला में. एंड दैट्स व्हाई these rains or the pre-monsoon rains which occur before 1 June in Kerala, they are called as mango shower. Mango shower. While in Karnataka, hills like Baba Budan hills which have coffee plantation, वहां पर चेरी यानी कि लाइक कॉफी वगैरह में फूल निकल आते हैं. The flowering of coffee and all occurs. और इसलिए the flowering of those flowers or the blossoming of those flowers, which has led to the name cherry blossom in Karnataka. Cherry blossom in Karnataka. ठीक है, वो जो फ्लावर है वो ब्लॉसम होते हैं. And these blossoming flowers, छोड़ो मजाक नहीं करते, काम की बात कर लेते हैं. तो मैंगो शावर एंड चेरी ब्लॉसम in Karnataka and Kerala. Right? Then another one is Kal Baisakhi and Nor'westers. Kal Baisakhi. Anyone from Northeast? Yes. Anyone from Northeast? They are called as Kal Baisakhi and Nor'westers in Bengal and Northeastern region.
in Bengal and northeast Elizabeth. यहाँ एलिजाबेथ भी कोई है कभी? तुम लोग कोड लैंग्वेज में बात की करते हो, मैं तो क्लियर बात करता हूँ। सांगली, हाँ। मैंगो शावर वाज इन केरला। At Chaitra's home, हाँ चैत्रा, चैत्रा को तो पता होगा मैंगो शावर के बारे में। सर काल बैसाखी एंड नॉर्थ वेस्टर नॉर्वेस्टर्स। नॉर्थ वेस्टर। ये बेसिकली काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर, उस आंधी तूफान भी कहते हैं इसे, आंधी तूफान भी कहते हैं। लाइक ये नेम यूज होता है यूपी में, एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड देम यूपी में भी आता है आंधी तूफान के नाम से। तो इट इज ऑल अबाउट द प्री मॉनसून एयर और रेनफॉल विच इज सीन इन बंगाल। तो बंगाल में उसे क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उसे कहते हैं नॉर्वेस्टर्स। हाँ हाँ, बिहार में भी। बोलो, अभी ने कुछ कहना था? रिजॉइन किया था। ठीक है, तो दैट्स इट। और भी कुछ नाम है वो आपको लोकल विंड्स में धीरे धीरे पता चल जाएंगे। ये वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। पीरियोडिकल विंड्स मेरे खत्म हो चुके हैं। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कंसेप्ट कॉल्ड लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, हाँ, इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो बताया ना, नॉर्वेस्टर्स। वहाँ पर इन्हें नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं। Although these are local winds, but they occur before the monsoon and have special significance. That's why they are known. Huh? So done. Till now, things are clear. हाँ, बोलो। Sir, Kal Baisakhi called in Bengal and Bihar and Northwestern in Northeast. Northwestern and Northeast. Thanks. और अंडमान एंड निकोबार में भी पूरे साल रेनफॉल होती है। मैंने शायद बता दिया आपको, है ना, क्योंकि यहाँ से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। ठीक है, तो दैट्स अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द वेस्टर्न घाट्स। दे आर द 3 रीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर काफी बारिश होती है, काफी ज्यादा। ठीक है, और तो नॉर्थ ईस्ट में होती समर्स में ही है, विंटर्स में बहुत कम रेनफॉल। ठीक है, डन, क्लियर टू ऑल टिल नाउ? यस, टिल नाउ क्लियर टू ऑल? ओके, यस, सीआर, निखिल, निष्ठा, सांगे, सुब्रा। ओके, नाउ कमिंग टू लोकल विंड्स। तो लोकल विंड तो वही है जो, ये वही वाली हवा है जिसके थ्रू आप अपने पैगाम भेजते हैं। बस वही वाली हवा है। तो लोकल विंड्स आर बेसिकली, यू नो, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, ये लाइक नेचर इनका हो सकता है, दे कैन बी वार्म विंड्स और हॉट विंड्स, और दे कैन बी कोल्ड विंड्स। बस यही सिंप्लिसिटी है। और ये लोकल प्रेशर कंडीशन चेंजेस की वजह से चल सकती है। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस की वजह से, कि अर्बन हीट आइलैंड्स में जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा कर देते हैं दैट वी हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो यहाँ पर विंड्स चलने लगे, एंड दीज आर हीटेड विंड्स। तो ये भी एक एग्जाम्पल है लोकल विंड। बाकी हम आते हैं और एग्जाम्पल्स। CR is trying to write something. Yes, CR. No, Professor. I was just going to ask you if those mango shower, cherry blossoms, Kal Baisakhi, and nor'westers were monsoon winds? Pre-monsoon. I already told you that they are pre-monsoon winds. The winds that occur during the summer time, like during this March to May time, and they are not because of monsoon, because the monsoon in India starts from 1st of June, or rather 1st to 15th June. Okay. But before that, if there is rainfall, that can be termed as pre-monsoon.
Okay. Yes. So coming to the local winds, I would like you to write these things which which I'm not going to dictate. Yes. So the hot winds, Loo are, yes, obviously the Loo are the local wind. मैं अभी बताऊंगा. तो local winds की खासियत क्या है? What they are composed, like what the characteristics of local wind. Local winds are those flowing over the wind which are flowing over a very limited area and are between like very small low and high pressure differences. कि कोई छोटा सा एरिया है, यहाँ पर ही लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, यहीं पर ये विंड फ्लो कर रही है. तो दैट लिमिटेड विंड कैन बी टर्म्ड एज लोकल विंड जनरेटिंग बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशन. तो मान लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, अब यहाँ पर बेल्ट जनरेट हुई थी ओवर द सी और ओवर द लैंड वो जनरेट नहीं हुई. तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है, ये विंड ऐसे चलने लग गई. तो अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि प्लेनेटरी विंड्स में दो जगह पर सेम प्रेशर होगा ही होगा हर जगह. दैट्स नॉट पॉसिबल. So there can be local differences of pressure at two places that can lead to generation of local winds. Yes. बस वही कहानी है यहाँ पर, that because of the limited pressure differences, the winds which blow over a limited area can be termed as local winds. They are impacted by the geography, कि उस place की geography कैसी है, mountain कैसा है, slope कैसा है, plain कैसा है, हाँ, वहां पर पड़ने वाला इंसुलेशन कितना ज्यादा है, वहां पर फॉरेस्ट कवर कितना ज्यादा है, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं. ऑल दीज लोकल ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स दे ऑल्टर द लोकल विंड्स. यस, दे इम्पैक्ट द लोकल वेदर एंड क्लाइमेट, और दे कैन बी हॉट और दे कैन बी कोल्ड. दे कैन बी हॉट और दे कैन बी. These are the characteristics of the local wind. Now we are going to discuss some of them in a bit of detail, a few definitions we are going to discuss. और मुझे लगता है कि ठीक है, आज तो नहीं हो पाएंगे, like we have only 10 minutes, so we'll hardly be able to discuss 2 or 3. But then today this and tomorrow jet stream और आपका wind वाला section खत्म हो जाएगा. Then we'll move on to precipitation section. ठीक है. So, humidity and precipitation. So where we are, the first wind that we are going to discuss is Loo, which can be seen blowing over the northern plains of India. Right, a few words about Loo. That this is hot and dry wind. This is hot and dry wind, which blows very strongly over the northern plains of India and Pakistan. ये जो लू है ना, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है फॉर हीट वेव. क्योंकि जब ये ब्लो करती है तो टेम्परेचर जहां से ये पास होती है वहां काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे इंडियन एक्ट्रेसेस मालदीव्स में जाके टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, वैसे ये लू करती है. इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टेम्परेचर फ्रॉम वेयर इट पासेस. अब ये अलग बात है कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है. दे ब्लो वेरी स्ट्रांगली ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो दैट्स इट अबाउट लू. बस मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पर किसी जगह पर इंसुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना, और कहीं पर लाइक वाटर अवेलेबिलिटी है, रिवर्स हैं, तो मॉनसून आ गया तो होगा क्या कि लाइक वैसे तो ये मॉनसून से पहले ही देखने को मिलती है, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिफरेंसेस जनरेट हो जाते हैं, व्हिच लीड्स टू दीज स्ट्रॉन्ग हॉट विंड्स ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, एंड दैट वी ऑल हैव सीन, लाइक एटलीस्ट वंस वी ऑल हैव विटनेस्ड. गर्मियों में ड्यूरिंग द अराउंड 2 PM अपनी बाइक लेकर निकलना, एंड दैट शुड बी इन जून, एंड देन यू विल नोटिस द लू. So कुछ गरम चाटे मार रहे हैं. हाँ, I'm sorry, could you repeat why you said that this pressure difference creates? This pressure difference is created because of the local availability of water sources or forest. तो वहां पर हाई प्रेशर कंडीशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंपैरेटिवली वो कूलर है. और जो अर्बन एरियाज होंगे या जो ओपन एरियाज होंगे, सैंडी एरियाज,
वहां पर बहुत हॉट होगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ विच एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड क्रिएट हो जाएगी लोकल लेवल पर, दैट इज और सभी जगह यही कंडीशन है, वाटर फॉरेस्ट हाई प्रेशर बना देंगे, और जो सैंडी एरियाज या अर्बन हीट आइलैंड्स ये लो प्रेशर जनरेट कर देंगे। ओके, लो इज डन। द नेक्स्ट इज फोन, और फॉन भी बोलते हैं इसे, फॉन। तो फॉन इज बेसिकली द विंड विच इज सीन इन द आल्प्स, कहाँ पर, आल्प्स, एंड दीज आल्प्स आर लोकेटेड इन द गार्डन ऑफ यूरोप। यस, यही बोलते हैं ना, द गार्डन ऑफ यूरोप। So fohn or fawn, I have explained the concept of fawn and chinook to you people. They are one and the same. Only difference is that fawn blows in Switzerland and chinook is in America. यहाँ पर देख सकते हैं आप। So how they work? The concept is very simple. They rise on the southern slopes of Alps, and then they descend over the northern slopes of Alps, and then they clear the huge land mass of the ice in the time of what I call spring, March के आसपास they clear that land, and that is used for doing agriculture, especially grape farming and all, होती है इटली वगैरह या स्विट्जरलैंड वगैरह में। That is basically it makes some favorable conditions for agriculture because it is descending, तो hot हो जाती है, so creates proper condition for doing agriculture, and that's what fawn is. And same is done by chinook, rising on the western slopes of Rocky, then descending and then opening a vast area for agriculture in prairies of US. मुझे उम्मीद है आपको पता है prairies क्या है। Yes. So coming to writing part, लिखो fawn or start writing that they are strong, dusty, dry and warm local winds. They are strong, dusty, dry and warm local winds which develop on the leeward side of Alps. लीवर्ड साइड जानते हो, अगर ये वाली साइड होती है विंडवर्ड, जहां से विंड आ रही है, और अपोजिट साइड होती है लीवर्ड साइड, है ना। So they are strong, dusty, dry and warm winds which develops on the leeward side of the Alps mountain. Develops on the leeward side of the Alps mountain. Full stop. Next point. इसी में this descending wind increases the temperature and melts the ice. This descending wind, चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। This descending wind increases the temperature and melts the ice. Opening the pasture lands for animal grazing and helps in early ripening of grapes. Opening the pasture land for animal grazing and help in early ripening of grapes. तो grapes जल्दी से ripen हो जाते हैं और फिर जल्दी से उनकी वाइन बना के पी जाते हैं, राइट। तो कितना बड़ा रोल है इस विंड का सर? एनिमल ग्रेजिंग एंड हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि वहां पर वाइन चाहिए ना, तो वाइन ऐसी मिलती है। Wine is in very high demand, at least in those areas. सर इसी विंड को स्नो ईटर भी कहा जाता है क्या? हाँ, यही है स्नो ईटर। ये यूरोप की स्नो ईटर है और चिनूक अमेरिका की स्नो ईटर है। अरे कोई पांच की हेल्प करो, पांच काफी पीछे नहीं रह गए आप। Increases the temperature. क्लास में ध्यान देना। Sir, I just skipped the one word and I continue writing all the things.
फिर पीछे से पूछा तो मुझे लगा कि शायद किसी का कॉल या मैसेज आ गया। डोंट टेक इट टू सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर दो, एग्जांपल ऑफ चिनूक। इसी में लिख लेना एक पॉइंट बनाकर, एग्जांपल ऑफ चिनूक, which is a snow eater wind blowing on the eastern coast of Rockies in America. Which is a snow eater wind, blowing on the eastern slopes of Rockies in US and Canada. Snow eater wind which is blowing on the eastern slopes of US and Canada. Done? So I think that's enough for today. Tomorrow we'll be discussing the Mistral, Santa Ana, and यहाँ वाली सारी winds हम discuss करेंगे थोड़ा डिटेल में। सिरोको, हार्मटन, खमसिन, लिवेंट, फॉन, मिस्ट्राल, बोरा, और बाकी नॉर्वेस्टर वी हैव डन। फॉन तो हो ही गया, लू हो गया। बाकी लाइक विल बी राइटिंग देम एज डिजर्ट्स, क्योंकि ये सारी डिजर्ट्स हैं, है ना। तो इनके बारे में, और दीज अदर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, और यही मैं आपको कराऊंगा। हाँ, दे आर सेम, बट यस, सिंस दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, द नेम हैव बीन चेंज्ड। यस। Okay then, this will be continuing tomorrow. Thank you and Jai Hind for today. I hope you all are enjoying you have enjoyed the class, and thank you very much. For all your doubts, you definitely can ask right now or later. So Chinook और Fawn दोनों same है? Yes, दोनों same है in nature समृद्धि। Geographical location दोनों की अलग-अलग है। Okay. You people should also take care of yourself, and that's it for today. Okay, good night. वैसे भी अब मैं जाके सोने वाला हूँ। Okay, we'll be meeting tomorrow.